So in the last 1 hour, in the last class, it will be 1 hour class, and there I will revise all topics, and I will tell you the more things what you should be study, and how can you write in your exam. Okay. So today, I don't know, there is a problem to sharing the slide. I prepared my slide today, but so the first thing, in India, there is a different kind. There is a lot of programs. Okay. So in your question is coming on, write down about the uh, elaborate any one program. Like for example, they will write the name. It will be tuberculosis program, or HIV control program. Okay. Or polio elimination program, either neonatal and child illness program, national program of blindness. So today I will tell you uh, something about all the programs. And there is also coming one question about the national health mission. Okay, what is the health national health mission में क्या क्या चीजें आती हैं, and also about the national leprosy program. Leprosy तो आता नहीं आपका. So just start with the tuberculosis. Anyone can tell me what is the program of tuberculosis? What is the cause of tuberculosis? That means it is Mycobacterium tuberculosis bacteria. yes. So first thing, for the tuberculosis, it is very common in India, and it is also TB is one of the most opportunistic infections. Also, like if the people is suffering from some disease, basically any because the TB is always the TB bacterium always attack the people who is immunodeficient, like the person's immunity is less. It is very more chances to get the infection with tuberculosis. Okay, and tuberculosis is airway respiratory infection. It occurs with the airway respiratory infection. What is the main? How can we diagnose the tuberculosis? Smallpox injection. No, it's not for screening. It's for confirmatory. I'm asking about the screening test. There is a difference between the screening and the confirmatory. Smallpox injection is screening. It's not screening. It is and Montos can positive a lot of diseases, not only for the tuberculosis. If there is any infected disease like respiratory infection disease, Montos can be positive. And sir, gene expert, we also do gene expert. You go in the higher side. I'm asking about the basic. Sputum test and Sputum test. screening of X-ray. Yes, that is the thing. First, what is the more common symptom of the tuberculosis? Cough, fever, and Cough more than how much? Nocturnal cough, and it is a continuous cough at night, and there's temperature at night. There will be three main more than 3 weeks. Okay. Cough more than 3 weeks. More 3 weeks. Yes. Some common symptoms, patient who is with the tuberculosis. So we can suspect if the patient is coming to OPD with the complaint of first three things. First one, cough with high grade fever.
in at night. Okay, and if the patient is giving the history about the weight loss, so we can suspect the tuberculosis in a patient. First, that's why it is a common symptom. What we are doing in the program, because programs is the clinical. I told you right now is the clinical symptoms. Okay, what we will do for the screening? What is the program for that? Program is like in India. In India, we want to eliminate the tuberculosis. That is the goal as soon as possible. So, as per program, there is a schedule. There is a scheduled camp in different areas, which is under surveillance of government servants, those are working in PSC or CST. Okay, so if the as per program, we will screening the people where we suspect either not suspect for them. So for the screening, we are doing what we are doing first to do the sputum checking, and if there's the three symptoms, three sample collecting in a different kind of vial, for testing of tuberculosis. The second good method it is X-ray chest. Okay, so if there is any foci in the lung chest, then we can suspect the person for tuberculosis. And right now it is a like medicine is too much advanced, so we can do HRCT test and gene expert also. Okay. What is the method for staining? It is the Dill-Nielsen method. World TB Day is 24th March. And what is our achievement of the program? Elimination level of tuberculosis less than per case in million population. Okay. And what is if the patient diagnosed with a tuberculosis, what is the method of treatment? We go for the dot treatment, and there is a program called DTPB, that is detect, treat, prevent, build, or something like that. It's a strategic plan for the elimination of the tuberculosis program. That is that. According to the program, we are treating the patient with the help of dot therapy. Direct, observed, treatment, short course. Yes. We go for the first line treatment like with rifampicin, pyrazinamide, and ethambutol, HRZE, as per the weight of the body of the patient. No, that is the medicine, but in program they will the examiner people want to know what do you understand by the program, and in the program how we treat it. So the basic treatment is given. There is the medicine part, but as per program, what we are doing for treating of the TB, it is the dot therapy. Okay. What do you understand by the dot therapy? Direct, observed, treatment. Treatment. What does it mean? Why we make this like direct observed treatment therapy? We need to edit the we need to observe the patient whether the patient is taking the medicine in real time or not. Okay. So we need to observe that whether the medicine is having any compliance issue or non-compliance issue. That's why we in this elimination program they try to build up the health workers, train the health workers, connect with the people in the villages whether the patient is how many patients are there with TB. The tuberculosis positive patients and all, and then they supervise that and they give the dot treatment to them
economically socio background people, and where the government is giving the treatment in the free of cost, and they explain the relatives also, or the friends, or the person with whom they stay. So what are the treatments they need to take, and after that they do the screening test also, whether the TB has been like whether it has been relapsed or not, and what else? Okay. DOT. That's good. Yeah, that's it. So there is a five things which make us success of that dot therapy. If there is a 5 component, that means our therapy is success. So first one is accountability. The second one is good quality of sputum microscopy. The fifth one, there is a political commitment. That means गवर्नमेंट जितना भी खर्चा करना चाहती है वो पूरे पैसे खर्चे होने चाहिए, ठीक है, उस प्रोग्राम के ऊपर, तभी जाकर के वो सक्सेस। क्योंकि अगर आप पैसे पूरा अच्छे से उसको खर्च नहीं करोगे, प्रोग्राम को सही से प्रेजेंट नहीं करोगे, लोगों को तो सही से दवा नहीं पहुंचाओगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। और द सेकंड, उसके बाद उसी में uninterrupted supply of good quality drugs. Okay, the same thing. The third one is that of the method, लेकिन उनको हमको अपने सामने देना, ठीक है। And high cure rate, there is a 3 components for the high cure rate. Okay, first one is appropriate medical treatment, supervision and motivation by the health and non-health persons. The third one is monitoring of the disease by health surveillance. And you जो इसका सुपरविजन और मोटिवेशन करते हैं, गवर्नमेंट इज पेइंग 1000 रुपीज, ओके, पर पर्सन। ओके, जो सुपरविजन के बंदे हैं तो उसको 1000 रुपए देते हैं क्या? या ओके, 1000। There is what is the principle of dot administration? First one, there is some principles for giving of the dot therapy. Actually में प्रोग्राम में हमें बेसिक वो यही लिखना है कि ट्रीटमेंट के बारे में ही लिखना होता है, ठीक है, क्योंकि अगर हम ट्रीटमेंट सही से देंगे तो हमारा इन्फेक्शन रेट कम होगा, ठीक है। अभी तक तो आप लोगों ने बताया वो सही है कि मतलब, इसलिए मैंने पहले बेसिक से बता दिया आपको, बट प्रोग्राम के हिसाब से आपको डॉट थेरेपी के बारे में ही एग्जाम में लिखना है। एक्चुअली दे वांट टू दैट मटेरियल इन theoretical part. Okay, so first one is the what is the basic component. There is a 5 basic component: accountability, good quality sputum microscopy, political commitment, uninterrupted supply of good drugs, and diet of the method. And for ensure high cure rate, don't worry about the notes. I will provide this notes, okay, in a PPT at last class. Don't worry, you will get the notes. If someone is writing and thinking I am unable to write, because the thing is they gave me very less time to complete your course, so that's why just I want to tell you the main things what you required for exam, and at least in exam what you should have to write if the question is came in the paper. There is a question in paper, okay. So if there is a question about the TB elimination program, you should have to basic things, right? TB, what is the symptoms of the TB, and how we diagnose, how we will diagnose. You can write, and that time you can write it, gene expert, Montos text, X-ray, and sputum screening. You can write each and everything, but and the last directly you can come with the dot therapy. In dot therapy, you should have to write in detail. Okay. So there is a diet therapy. This 5 main things. The third one, ensure high rate is appropriate medical treatment, supervision, and motivation and monitoring of the disease. Okay. What is the principle? There is the principle of administration of the dots. Okay. Dots is directly observed treatment, short course chemotherapy. Okay. And in dot therapy, this one health worker should be supervise all the at that in their areas.
And medication, you can know, we can give you with the two categories, but category 1 and category 2. Right now there is a different, so it is not medical exam, it is your theoretical exam. So that is the enough for you to write about the TB elimination program. Okay, when I will give you notes, there is a more detail. If you can mug up, you can write it in exam. Okay. Okay, the next one is पोलियो एलिमिनेशन प्रोग्राम. तो पोलियो के लिए हम क्या करते हैं, क्या है हमारे यहाँ प्रोग्राम इंडिया में? Pulse polio. यस, पल्स पोलियो. तो पल्स पोलियो 2 मुश्त जिंदगी की कितने ईयर तक के लिए हम देते हैं? 5 years तक के लिए. 5 years तक के लिए. It is conducted twice a year. Yes. So in there is a polio elimination program. So India, right now in India there is a case of polio right now. It was eradicated in 2011, I think. 2012. What? अच्छा ठीक है. Elimination and वो एलिमिनेशन का क्या मतलब हुआ कि अभी डिजीज है कि नहीं है, और इरेडिकेशन, एलिमिनेशन और इरेडिकेशन के अंदर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दैट? Elimination is like there will be 0 cases. Eradication मतलब totally इसको world से खत्म कर देना. But eradication is not yet happened because in Tajikistan there are some multiple cases coming right now of polio. Elimination would be in a specific area there is 0 cases, and eradication would be worldwide. There are no cases. एलिमिनेशन और इरेडिकेशन का सिंपल मतलब है, एलिमिनेशन मींस केस इज 0 बट सिम्टम इज स्टिल प्रेजेंट. इरेडिकेशन मतलब नो केस नो सिम्टम. दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ एलिमिनेशन and eradication. Okay. Yes, sir. So for national polio programs, here you can write in your own words. Okay, कि पोलियो क्या है, कितने, अच्छा सिम्टम्स क्या है पोलियो? कैसे, मतलब आप हाउ कैन वी डायग्नोज? जैसे हमने टीबी डायग्नोज कर लिया, कफ फीवर, पोलियो का कैसे फाइंड आउट करेंगे? There will be vomiting, stiffness, headache. There will be stiffness of the pain in the limbs. Okay. Paralysis, usually which will lead to paralysis, I think. Is there any deformity in polio? Is there any deformity in bone? Immobilization happens, so deformity is there. Actually, there's polio should be diagnosed with the acute flaccid paralysis. Acute flaccid paralysis occur within 4 weeks, less than 15 years of the children. Okay. There's the 3 things. There's the acute, flaccid, and paralysis. Three name, all of have their meaning. First one is, what do you mean by the whole sentence is acute flaccid paralysis. In there, in elaboration, you can, what do you understand by the acute? Acute means rapid prognosis of onset of maximum paralysis. Flaccid matlab loss of muscle tone. Okay, there is no deformity in directly in a bone. Okay,
if the person is not walking properly, after some time there is a deformity in a bone, but as per symptom there is a no deformity in a bone. Okay. And the third one is the paralysis. Paralysis means weakness or voluntary movement. Those symptoms can be occur in some other disease also, like Guillain-Barré syndrome, traumatic neuritis, but those always this should be differential diagnosis as per age. Okay. If a child is suffering from, there is a fever is also coming sometime. Okay. And there is a muscular weakness in lower limbs, so we can suspect about the polio. So how what is the investigation method of polio? Through this cerebrospinal fluid tapping? No. Good. No, 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 never, never. पोलियो कभी भी CSF फ्लूइड से डायग्नोस नहीं होगा, नेवर. For diagnosis of the polio, if there is any case of polio, because the route of administration in the body, polio, it is feco-oral. Okay. So the main thing for polio examination, we are doing stool examination. There's two sample of the stool. First one is the 24 hours and second one is after in 48 hours. That means अगर आज 4 बजे आपने किसी का स्टूल लिया, ठीक है, तो आपको दूसरा कल 24 आवर्स हो जाएगा, नेक्स्ट डे 48 आवर्स में दूसरा सैंपल लेना है. हाउ कैन वी सेंड द सैंपल ऑफ पोलियो टू द लैब? क्योंकि इट्स नॉट अवेलेबल ना इन एवरीवेयर फॉर डायग्नोसिस. It's with reverse chain. Polymerase chain reaction. No. This polymerase reverse chain. It is actually vaccination. Is coming in from lab to the person, and the stool examination is go from person to lab. Cold chain, reverse chain and cold chain. So vaccination is coming with the cold chain. Polio stool examination for polio, it is go with the reverse chain. It's called reverse chain process. Because हम क्योंकि basically polio is occur in villages, so laboratory is not present in any district. It is always go in big laboratory center, like which is situated in Bangalore, Mumbai, and somewhere. There is the centers available for determination of that. So the stool examination we send with reverse chain, and the vaccination is coming with cold chain process. Cool. But sir, but basically sometimes they take the specimens from the throat also, right? From feces, and occasionally from the CSF also as well, to isolate the virus. For polio? Yes. They detect the specimens from the throat as well. Suppose when the patient is coming, and pharyngeal swabs are taken from the throat as well, but yes, most commonly we do stool test only. And they do the detect in that one with through the PCR also, polymerase chain reaction. Okay, but CSF करने के लिए तो अभी मतलब कोई भी चीज कैसे भी करना, बट बेसिक थिंग इज पोलियो का आपका जो एक्यूट का केस है वो हम स्टूल एग्जामिनेशन से करते हैं, क्योंकि आपके प्रोग्राम के हिसाब से आपको ये चीजें लिखनी है. ठीक है, वो आपको जितनी नॉलेज है आप वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, बट दिस थिंग्स आर very important to write in your note exam at the time of exam in your answer sheet. Okay, because they want to know this, because they are not coming from the medical faculty. Always the teacher is from like
they are teaching for a long time, so they know what is national programs and these things. So you should have to write those things. What is our basic thing for polio program? ठीक है, पोलियो के सिम्टम्स क्या हैं, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं। अच्छा, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए वायल का हम कैसे, अच्छा वायल आपने देखा है कभी किसी ने? कितनी देर में खराब हो जाता है वायल उसका? 4 hours. कैसे पता करते हैं? सर वो कलर वो होता है। हाँ, कलर हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है ना उसका। कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। हम अगर कलर चेंज हो गया तो उसको वायल को हमने फेंकना है, ठीक है। फिर Yes. हम उसको पोर्टफोलियो के उसमें नहीं रख सकते। किसी के पास उसमें एक चीज देखना, किसी के पास नोट्स है क्या? मुझे तो मिला नहीं। इसमें ब्लाइंडनेस प्रोग्राम के बारे में कभी पूछा है क्या? मैंने तो किसी क्वेश्चन पेपर में आपके देखा नहीं, इसलिए मैं उसको अभी स्किप कर रहा हूँ, पर नोट्स में मैं दे दूंगा, एक बार रिवाइज कर लेना उसको, ठीक है। अभी मैं बेसिक मेन चीज जो आपके प्रोग्राम से उसके बारे में बता देता हूँ। नेक्स्ट जो है वो आपका HIV एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। What is the objective of this national HIV or AIDS program? Divya. Sir, what was your question? What is the object of national HIV or AIDS control program? To reduce the infection, new infection, and to to treat treat the patients who have already been infected and those who require it, and by uh, identify and concentrating the separating the people from the who has been tested positive and all, and That's okay. You are right. So first, in general, you should have to just remember and you write in what is the main object of the national HIV control program. First one, reduce the new infection, not only normal infection. Mention reduce new infection by 50 till 50%. जो केसेस हैं उनके लिए हमें इतना वरी मतलब प्रोग्राम इतना वरी, पर कहीं पे भी न्यू केसेस नहीं आने चाहिए, ठीक है। या अगर आ भी रहे हैं तो उनको सिम्टोमेटिकली हमें 50% के नीचे ही रखना है। एंड द सेकेंड ऑब्जेक्ट इज प्रोवाइड केयर एंड सपोर्ट ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, उनका हमको ख्याल रखना है। What are the target national AIDS program? First one is basic purpose. What is to reduce the transmission of HIV among the most vulnerable population. मतलब सबसे टारगेट क्या है इस प्रोग्राम का? सबसे पहले जहां पे HIV होने के चांसेस हैं उसको हमको रिड्यूस करना है उस पॉपुलेशन में। अच्छा, मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन कौन सी है? मतलब सबसे ज्यादा एड्स कहाँ पे होने के चांसेस हैं? sex workers, या drug abuse people, and ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स, yes, ड्राइवर्स, ठीक है। So what as for program, what is our main aim? Our basic approach is to reduce the transmission of HIV as the most vulnerable population, जहाँ पे होने के chances हैं. That's why there is in sex workers places we are doing government is always testing their blood for the HIV. Okay.
either random checking is also occur in some truck drivers. Okay, drug abusers, yes, it is, we can do it. बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, अच्छा ये बताओ, ठीक है, हम जैसे ड्रग अब्यूजर सबको पता है कि इट इज वेस्ट फॉर द सोसाइटी, बट व्हाई वी आर डूइंग सच थिंग? क्यों हम उनके मतलब HIV के टेस्ट के पीछे पड़ रहे हैं? Sorry, sir, did not get your question. Okay, the question is like that. We are knowing drug abusers are I am specifically talking about the drug abusers, not about the sick person and other person. If the person is drug abuser, why government is wasting money for testing or HIV on him, upon him? So basically, what happens, like the drug abusers who are there, they, you know, their IV, they do the basically the IV one, and the one person take one syringe at a time, and not, like they share the syringes as well. So that is the reason, like the drug abusers need to be, Yes, that is the thing. The basic thing is when they are using their needles now, they are throwing in the they are not caring about the with throw about the they can throw their needle anywhere. If their needle can be लाइक हमारे जो सफाई वाले हैं, अगर उनको कभी चुभ गई कहीं से, ठीक है, या फिर समटाइम व्हेन दे टुक द ड्रग ना, they took the needle, they can put insert someone also. They share with each other, so that is also the biggest concern. For just corrupt minded, they can give this needle, they can throw anywhere, and if the person is like for example, हम लोग अभी ब्रिज के नीचे चलते हैं, ठीक है, ऑलवेज दे आर फाइंड आउट नियर बाई ब्रिजेस, तो समटाइम क्या होता है, पैर में चुभ गई, तो इसीलिए गवर्नमेंट उनके ऊपर ऐसा खर्चा करती है कि भाई इनके, ये तो खैर सोसाइटी के लिए खराब हो गए हैं, तो इनके वजह से किसी और को भी इन्फेक्शन ना हो, ठीक है, दैट्स द पॉइंट. In treatment, what we are doing, first thing, we are trying to do the behavior changes, okay, and we are doing the communication, we are doing the treatment of HIV, and always we are with the group discussion, either for individual discussion, we are communicate, we are supporting them, because sometimes what happen, if some HIV positive patient, they can took the they can try for suicide. तो अगर हम उनको समझाते रहेंगे कोई बात नहीं है, आप दवा से ठीक हो जाओगे, आप ये प्रिकॉशन लो, ये चीजें हैं, तो वी कैन सपोर्ट हिम फॉर लाइफ, बिकॉज इन इंडिया एनी हाउ सोसाइटी इज नॉट अलाउड, तो या हम उनको मार भी नहीं, तो हमारी सोसाइटी में अगर ऐसे लोग हैं, या जैसे कभी कभी अच्छे अच्छे सोसाइटी वालों को भी कभी किसी को कहीं से हो गया, किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो गया, अच्छा, एक्सेप्ट intercourse, what is the other cause of main cause of HIV infection? Needle prick injury for the healthcare professionals, and this one, blood transfusion, Vertical also one. Mother to baby. Mother to baby, yeah. तो वही चीज है कि actually में in part basically government is paying attention to those whose behavior is good but they get the infection with the HIV. Always they are, we are giving free cost of medicine and counseling them to them कि you can alive, because it is not like किसी को भी हो जाएगा, ठीक है, हो गया है तो उसको कैसे कैसे प्रिकॉट करके हम रह सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, वो सब सारी चीजें प्रोग्राम के अंदर चलती हैं. लेप्रेसी का नाम सुना है?
Yes, sir. जी सर. क्या कॉज क्या है लेप्रेसी का? Mycobacterial debris. लेप्रेसी, ठीक है. इसमें दो तरह के लेप्रेसी है, ठीक है. द ड्रग, ओके, ट्रीटमेंट इसका सेम है ट्यूबरकुलोसिस की ही तरह है, रिफाम्पिसिन, क्लोरोजिफिन एंड डेप्टोन, ठीक है. तो इसमें आपको लेप्रेसी प्रोग्राम आपके नोट्स में तो नहीं है, बट इन जनरल अगर कभी एक 4-5 लाइन का कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसमें लेप्रा 1 एंड लेप्रा 2 होता है, ठीक है. So there is a different kind of symptoms in leprosy. Lepra 1 is occur into the borderline leprosy, and lepra 2 is occur into the uh, LL, I don't forgot. In type 1, what symptoms is reddish, sallow skin lesion, painful, tender, ठीक है, sallow nerve, sign of nerve damage. नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा. बस डिफरेंस इतना है, सेकंड वाले में पेन नहीं होता, फर्स्ट वाले में पेन होता है, ठीक है. तो नहीं है. ये कुछ आपके जर्नल डिजीज के प्रोग्राम्स हो गए. अब आपका इंडिया में और भी इसके प्रोग्राम चलते हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीज के प्रोग्राम, ठीक है. वेक्टर बॉर्न डिजीज में क्या क्या आते हैं? Mosquito, rodents, Yeah. flies. 5 नहीं, देखिए बेसिकली हम लोग इन आवर routine language we can use there's the 5 things. First one is malaria, dengue, filariasis, kala azar, Japanese encephalitis and chikungunya fever. 6 diseases, they are coming under National Vector-Borne Disease Control Program. So in the question they can ask you, please write, elaborate any one of the national vector-borne disease. So you can elaborate anything: malaria, filariasis, dengue, kala azar, Japanese encephalitis, chikungunya fever, all. What is okay? Then yeah. Ask, anyone want to ask something? So could you please brief about the exams? Like when will be the exam and what is the process of exams? पेपर कितने का आएगा, कैसे वाइवा होता है या रिटन होता है या एमसीक्यू पैटर्न होता है? That is the main thing. There is a no viva. Okay. There is a two types of exam. There is a 2 segments for your exam. 30 marks internal, 70 marks is external. Okay. So in internal exam, they will give the question paper by the university. Okay. There is questions for short notes. Okay. In there, they just they'll ask for 6 or 7. They will give those 6 or 7 questions, and sometimes they are telling you can write any one of the 5, any one of the 6. Either they give the 5 or 6 topics, 5 or 6 questions, and they tell you please write all the things. So in what in internal exam, always there is a short note. You can write only one page for the one exam. Like example, they will ask, please write down about Sensex. I think Sensex I teach the last lecture. Okay. Because most of the short question is coming from their topic, in that topic, like please write about the Sensex, please write about the this thing, level of care. Okay. There is there is a program, I will tell you later. Write about the ASHA workers,
Okay. Then they can ask you some question about the. Hold a second. I'll tell you the question. Hold. They can ask you about write about the national 5-year plan. Last time I told teach about the 5-year plan. Either write about the immunization program. Okay. Either in short, they can ask you this International Health Organization. It is you should have to write about the WHO. Okay. Either in the first or second lecture, I told about the all kind of mortality, morbidity, crude death rate, birth rate in demography from the demography session. From the part of demography, they can ask anything from the demography, right? Either they can ask you IMR, what is IMR, what is crude death rate, what is birth rate, what are the vital, just they can ask you about the what are the vital events. Okay. So vital events and those things I teach in the first class, but don't worry, there is a syllabus. Okay, listen, your first topic is demography and vital statistics. Okay. I will according to that what is with the definition and vital statistics. Okay. Here the concept demography concept, vital event, significant and recording of vital event, census and its impact on the health policy. Okay. The second slide I will make, like your second topic is health scenario of India. I will make PDF with health scenario of India. In there is coming of your health scenario of India, past, present, future, national health policy and population policy. Last time I teach is national health policy and interpostal coordination, national population policy and national 5-year plan. Your third topic is national health program. Those I today those are the part of your lecture today. I will make PDF with national health program with all things. What is the object? What is the action plan, target, operation? How we are achieving? Okay, contrast in various national health program. The third year in that there is the next topic is health of healthcare of community, like healthcare delivery system in India, primary, secondary, and tertiary care, integrated system of medicine in India, community participant in healthcare delivery system, health system in developed countries. Okay, so it is your whole syllabus. Here they can ask all short and long questions. Short question is coming like, please write about the national 5-year plan. Please write about primary center. Please write about the secondary care system. Either they can ask all. Please write the primary and secondary and tertiary care. Either they will ask write about the PSC, primary CSC, PSC, CSC at about the PSC and CSC. I teach in the first lecture about the PSC and CSC. Okay, so that is the format of your paper. Or either when the question is come with 14 marks, the question will be like that. I have one paper, so I am reading it. You can understand. For example, there is a question: what do you understand by the term of vital event? What is the impact? What is the important use and application of the vital statistics in healthcare management? Okay. Either R in the first question there is R. You can write about this. Either you can write define the community participant. Discuss how a community play an important role in the importance of healthcare of India. So you will get this topic in healthcare system. So that this is your long question. And short question for 12 marks. Write short note any one of your 4, like Siddha in Unani medicine, immunization program, acupuncture and acupressure, ASHA workers, ICE activities, mortality and morbidity rates. Either long question is like that. There is a okay.
write a detailed note on NHRM, National Rural Health Mission. So it is a part of your today lecture. I think it, I will discuss it. Don't worry about that. Okay. And either there is a question of which is right now I am teaching you. Write a detailed note on National Health Program of India. Also, especially explain about the NABGC or NACP implementation in the state program, National Vector-Borne Disease. Okay. So today I am teaching about this National Vector-Borne Disease Control Program. In that question also, or they ask or write definition of demography. Definition of demography. Also explain about the various steps involved in the demography cycle. So the demography chapter I explained in very detail in one lecture. So because most of the questions come with this thing. Okay. So there is a short note about for 7 marks. Write any two steps, level of care, and this International Health Organization and National 5-year plan. Okay. So this is the format of the paper. How much marks, sir, for each question? It is different. It's different pattern. Total marks will be 70. Either they can give you big questions, 2-3 big questions, then short note. Either they can give you one big question and different kind of the short question. So it depends on the examiner how he ask. But if there is a short question, there is a good they are giving good marks, because in that you can write anything. Long question marking is not good. Yeah, it's been years that we have lost the touch of writing essays and important points. And now it will become challenging for us to produce. No, there is no. Don't worry about it. There is no challenge. What I am saying in the last lecture, that's why I yesterday when I was talking with the your institute, I told give me one separate hour, okay, only for if you listen that my lecture, if you will cover at least my notes in exam, I am sure for sure that you will write something about the. Please don't left any question. Okay, you should have to write anything in all questions, at least with some authentication. Like don't like what they ask you are writing to, because always you will get the question with your topic. If you read one time, you will definitely write something. So the next is like National Vector-Borne Disease Program. Okay, so here like if question you got there is a question write about the National Vector-Borne Disease. So you can write there is a 6 main vector for vector-borne disease. First one is the malaria, and ये तो याद ही रहेंगे, कॉमन चीज है यार. मलेरिया है, डेंगू है, उसके साथ फिलेरियासिस है, काला आजार है, एंड चिकनगुनिया. तो ठीक है, एंड जापानीज इंसेफेलाइटिस. अगर आप सिर्फ डिजीज का नाम भी लिख, वेक्टर का नाम नहीं भी लिखते हैं, इट्स ओके, बट हियर वेक्टर नाम भी बहुत आसान है, क्योंकि वैसे तो बहुत ढेर सारे हैं, बट जो हमारे प्रोग्राम के उसमें आते हैं वो 6 हैं टोटल. मलेरिया, फिलेरियासिस, डेंगू, काला आजार, जापानीज इंसेफेलाइटिस. उसके आगे आप वेक्टर का नाम लिख सकते हो. देखो मलेरिया तो आपको पता है किस चीज से होता है, फ्लेविवायरस. डेंगू एडिस एजिप्टी नो और फीमेल एनाफिलिस. मलेरिया क्यूलेक्स एनाफिलिस. ठीक है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय फीमेल एनाफिलिस. फिलेरियासिस का भी कूलेक्स है. ठीक है, आपका जापानीज इंसेफेलाइटिस का भी कूलेक्स लिख सकते हैं. डेंगू का एडिस है. ठीक है, एडिस है पूरा लिख. क्योंकि देखिए ये मेडिकल एग्जाम नहीं है, आप मतलब आप नॉन मेडिकल से मेडिको में आ रहे हैं. ठीक है, कि वहाँ किसी को पता नहीं है कि आप मेडिकल से हैं नॉन मेडिकल से. अगर आप इतना भी चीज लिख देते हैं ना, तो एग्जाम विल अंडरस्टूड कि आपने मतलब इस चीज को जाना है. तो फर्स्ट प्रोग्राम मलेरिया, व्हाट इज द कॉल. तो अभी समझ में आ गया. इन एग्जाम यू कैन एलिब्रेट योर वर्ड्स इन योर ओन वर्ड्स ना, कि मलेरिया कैसे होता है. ठीक है, अब वहाँ पे मलेरिया सिम्पटम्स क्या है, साइकिल क्या है, क्या होता है. ठीक है, और कैसे कंट्रोल करते हैं. ठीक है, अभी मलेरिया का तो सबको पता है कि एटलीस्ट व्हाट वी आर डूइंग.
डीटी छिड़कते हैं भाई, हाँ मोहल्ले में आता है ना डीटी वाला, जब मलेरिया के सीजन होता है। जी 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 ठीक है, so if you know the thing, you can elaborate your words in the exam. Don't need to mug up and write it whole book in ओके। exam. ठीक है, सर आपको वो जितना एक एग्जाम, हम्म सॉरी सर, उधर सर एक एग्जाम पे एक पेपर के का दूसरे पेपर पे कितने टाइम भी रहता है, मतलब टाइम? यार ये आपकी वो यूनिवर्सिटी के शेड्यूल के ऊपर है। ठीक है, हमने जब दिया था तो हमारा कंटिन्यू था। अच्छा ओके ठीक है, क्योंकि वो शेड्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। ओके। ऐसे पास द सेम यूनिवर्सिटी ना, तो दैट्स आई नो द ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो उसमें क्या है कि इस डिपेंड, कभी कभी वो 13-14 दिन में पूरा आपका पूरा 10 दिन में एग्जाम खत्म कर देते हैं, या तो वो 15 दिन में खत्म कर, अगर 15 दिन में खत्म होगा तो आपको 7 दूनी 14 साढ़े 7 सब्जेक्ट का एक दिन अल्टरनेट डे एग्जाम होगा। ठीक है, इफ दे विल फिनिश इन अच्छा अच्छा। विद इन 10 days, दैट्स मीन आपको वही संडे को एक छुट्टी मिलेगी, या कोई जस्टेड हॉलीडे आ जाएगी वो मिलेगी, और अल्टरनेट एक के बाद एक। फर्स्ट MHA फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट सेम का सब फर्स्ट सेम सबसे इजी है, बिकॉज अच्छा ऑल सेवन सब्जेक्ट इज इंटरलिंक्ड। ठीक है, ओके अगर आपने ओके। यहाँ ये चीज पढ़ ली, अभी आपको और क्या क्या है, अभी आपको एक बायोस्टैटिक्स आएगा। ठीक है, बायोस्टैटिक्स हो गया क्या आपका? नहीं बायोस्टैटिक्स हुआ नहीं है अभी तक। ठीक है, बायोस्टैटिक्स आएगा, फिर उसी में शायद से आपका एक सब्जेक्ट बायो आर्ट्स वगैरह का है। ठीक है, बेसिकली ये पूरा पब्लिक हेल्थ का ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब कुछ अपने, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर जो होगा वो थोड़ा टिपिकल होता है, क्योंकि उसमें फाइनेंस आ जाता है। ठीक है, वो सब और मैथमेटिकल चीजें आ जाती हैं, तो वो फर्स्ट सेमेस्टर इज वेरी इजी, एंड इफ यू रीड वन सब्जेक्ट यू कैन गेट ऑल द सब्जेक्ट इंटरलिंक्ड। ओके, सब जगह मिलेगा आपको। So, where we are to national vector-borne disease. Okay. First one is the malaria. What is the cause of malaria? That is the female anaphylaxis. Okay. एक्सक्यूज मी सर, हाँ, या सर हमारे एग्जाम्स कब होंगे फर्स्ट सेम के? यार मुझे तो फेब में बता रहे थे, फेब में आपका जैन या फेब में वही टाइमिंग है उनका, फेब जैन के बाद, फेब लास्ट आई एम सॉरी, फेब लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक होता है बेसिकली वहाँ पे एग्जाम, ये तो सर वाला। ठीक है और सर, थोड़ा टाइम मिल जाएगा हम लोगों को पेपर करने के लिए, क्योंकि अभी एकदम से जस्ट अभी ज्वाइन किया। नहीं, इट्स ओके, इट्स नो प्रॉब्लम। आप सभी लोग काम कर रहे हैं, मतलब वर्किंग है सभी लोग? नहीं मैं सबैटिकल लिया हूँ सर पढ़ाई के लिए, नहीं, ठीक है, जॉब से। वो हो, देखो एग्जाम के लिए सबसे एवरीथिंग फर्स्ट बी कूल फॉर एग्जाम। ठीक है, एग्जाम में एक तो कोई फेल नहीं होता। ठीक है, बहुत कम लोगों का होता है, और अगर आप 1-2 दिन भी पूरे सब्जेक्ट को सही से पढ़ लोगे ना, आप वहाँ पे कुछ ना कुछ लिखने, ये प्रिवेंटिव मेडिसिन ऐसी है कि वहाँ पे आप कुछ ना कुछ लिखने लायक, अगर आपने एग्जाम में कुछ ना कुछ लिखा है तो आप आराम से, क्योंकि 30 मार्क्स में, देखिए 30 मार्क्स में 20 मार्क्स तो एटलीस्ट मिनिमम 20, मैक्सिमम 26। ठीक है, ये तो आपको मिल जाते हैं वहाँ पे। उसके बाद आपका जो 70 नंबर्स का पेपर होता है, उसमें आपको 30-35 के आसपास लाना होता है, तो दोनों मिला मतलब मिला के आपका 50% हो जाता है, 50 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, 50 आपका पास है, अब उसके ऊपर जितना भी आप ले जा सकते हैं वो आपका टैलेंट है। ठीक है, ओके, जस्ट आउट ऑफ 70 में से 50 पासिंग मार्क है? नो इट इज 100 ना, 70 + 30 है। हाँ ओके, ना आई एम टॉकिंग अबाउट द थ्योरी। थियरी का स्पेसिफिक नहीं है इनको, मतलब 35 वही जो नॉर्मल क्राइटेरिया है, 35 ओके ओके, मुझे लगा 50% है मतलब। तो वो बोल रहा था कि 50% के अबव आ जाता है दोनों, क्योंकि 20 मार्क्स एटलीस्ट आपका जो इंटरनल एग्जाम होता है वो यूनिवर्सिटी दे देती है, आप 70 में से 30 के लायक तो लिख ही देते, तो वो 50 टोटल हो जाता है, तो आपका बैक होने का चांसेस कम होता है। इसलिए एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, बस इतना याद रखना, कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन में आपको लिख के ही आना है। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा। ठीक है, चलो यार, ठीक है, ये हमारा नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज में आपका सबसे पहला आ गया मलेरिया। ठीक है, एवरीवन क्लियर अबाउट द मलेरिया? हेलो, यस यस सर। सर, everyone about
have idea about the malaria? Yes, sir. So if there is a question is came, what is the right about the malaria elimination program? Initially, you can write whatever what you are knowing uh, about the malaria. Okay. So what is malaria? Malaria is caused by female anaphylaxis. Okay. What we are doing for the elimination of malaria? We are doing uh, this National thing. Malaria Control Program. In this program, what we are doing, we are giving all kind of the precaution for the people, like DTD spraying. Okay. Yes. DTD spraying, mosquito nets, mosquito nets. Okay. And how will diagnose the malaria? Malaria. Step petal fever, ladder petal fever, or step petal fever with chills. Diagnosis is by thick and thin smears. Okay. Mhm. thin स्मेयर्स कैसे बनाते हैं? स्लाइड्स पे. ठीक है. स्मेयर्स जो है स्लाइड से बनाते हैं वो पैथोलॉजिस्ट के हिसाब से. थिक स्मेयर है तो दैट इज सेंसिटिविटी प्रेजेंस ऑफ मलेरिया. अगर थिन स्मेयर है दैट मीन स्पेसिफिटी स्पीसीज आइडेंटिफाई. अगर ठीक है स्मेयर आपका मतलब उसको मलेरिया है. और अगर थिन स्मेयर है दैट मीन उसको उसके हम स्पीसीज जो होते हैं ना मलेरिया के 5 वो आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है. और आपका दूसरा आता है काला आजार को ही लिस्मिनियासिस बोलते हैं. ठीक है. वेक्टर बॉर्न डिजीज में आपका दूसरा आता है काला आजार को ही लिस्मिनियासिस भी बोलते हैं. इसका वेक्टर बॉर्न डिजीज है लिस्मिनियासिस डोनोवानी. और इसके डिस्ट्रॉय के लिए सेम हम लोग यूज करते हैं डीडीटी ही यूज करते हैं एज पर मलेरिया. ठीक है. डीडीटी का ही स्प्रे होता है. जिस एरिया में भी हमको लग रहा है कि यहाँ पे लिस्मिनियासिस होने के काला आजार होने के चांस. अच्छा काला आजार इंडिया में कहाँ पे कुछ पता है किसी को? नेपाल बॉर्डर में ज्यादा, गोरखपुर में ज्यादा, सॉरी गोरखपुर में जापानीज एनसेफेलाइटिस होता है. बिहार काला आजार बेसिकली बिहार वो और वेस्ट नेपाल, बंगाल. बिहार 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 एंड एंड वेस्ट वेस्ट बंगाल. बंगाल. ठीक है. एंड डायग्नोसिस कैसे करते हैं? यहाँ पे हम लोग लेते हैं. ठीक है. एस्पिरेट करते हैं फ्रॉम मतलब पर जो पर्सन इन्फेक्ट हो गया उसके स्प्लीन से, लीवर से, बोन मैरो और लिम्फ नोड, स्किन. ठीक है. ये 4-5 जगह से इसका सैंपल लेकर के टेस्ट करते हैं इसका. स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो, लिम्फ नोड एंड स्किन. ठीक है. तो सबसे ज्यादा ब्राजील में इफेक्टेड है ना काला आजार, वो ब्लैक फीवर बोला जाता है. एंड ईस्ट अफ्रीका में मेरे ख्याल से बेसिकली अफ्रीकन, ये अफ्रीका में है. अफ्रीका में. पीएसएम में माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारे पढ़ाए हुए होते हैं. सैंड फ्लाई, सेट्से फ्लाई, वही है ना सैंड फ्लाई वाला. तो भूल गए, कुछ पढ़ना पड़ेगा. रिवाइज कर लो, आ जाएगा, कोई बात नहीं. ठीक है. अच्छा दूसरा इसमें एक आपका टॉपिक है नेशनल हेल्थ मिशन है ना. मैं भी कहीं देख रहा था. तो वेक्टर बॉर्न डिजीज में आपका 2 ही 3 है. ये चारों हो गए. ठीक है. जापान एन्सेफेलाइटिस में भी ये आपका इसमें अभी तक जितना आपको मेन पूछा है वो सिर्फ मलेरिया डेंगू के बारे में ही पूछा. अच्छा डेंगू का तो लिख ले जाओगे ना, कॉमन है डेंगू का. डेंगू के लिए कोई प्रोग्राम है क्या? नहीं है. ठीक है. एलिमिनेशन प्रोग्राम सिर्फ आपका मलेरिया और काला आजार के लिए है. ठीक है. बाकी सब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होते हैं. डेंगू का हो गया,
जापानीज इंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया, ये जो है वेक्टर बॉर्न डिजीज, इसमें प्रोग्राम सिर्फ 2 ही में है। मलेरिया, या तो मलेरिया पूछेगा या तो आपका क्या नाम है, काला आजाद पूछेगा। ज्यादा करके मलेरिया ही पूछता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो नेशनल हेल्थ मिशन में क्या क्या कोई जानता है कुछ नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में? इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हाँ, और दूसरी नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। yes, there is the 2 things about the health mission program. There are many programs run, जैसे कि जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। हाँ, तो yes 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 yes, go ahead. They also have national mobile medical units and facility based for newborn care। उसी में हम लोग सर आशा वगैरह पढ़ते हैं। ओके, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ इसका, क्योंकि ये नोट से आपको थोड़ा सा एग्जाम के टाइम इसमें शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएगा, ठीक है। नेशनल हेल्थ मिशन, जैसे कि इन्होंने बताया, टू तरह के हैं, एक रूरल के लिए है, एक अर्बन के लिए है। ओके, कब लॉन्च हुआ था? 2000 नेशनल हेल्थ मिशन जो लॉन्च हुआ था 2013 में। कितनी पॉपुलेशन कवर करना है इसमें, वो छोड़ दीजिए अभी। रूरल मिशन है, ठीक है। अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये सब चीजें आती हैं रूरल मिशन में। तो रूरल हेल्थ मिशन में व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ दिस? प्रोवाइड एवरी विलेज इन अ कंट्री विथ ए ट्रेंड फीमेल कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है, विच कॉल्ड आशा। आशा के बारे में शॉर्ट नोट्स भी आएगा, ठीक है। इसलिए आशा के बारे में नोट्स आएगा आपको, मैं ये दूंगा उसमें से आप क्योंकि मेरी जो नोट्स है वो आपके के पास से बहुत डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मतलब जो जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ या मेरे पास जो नोट्स हैं उसमें शॉर्ट है, तो आशा के बारे में आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि आशा का क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे लॉन्ग में आए चाहे शॉर्ट में आए। अच्छा, आशा वर्कर्स क्या होती हैं? आशा वर्कर्स क्या क्या होती हैं? Accredited social health activist। नहीं, दैट इज द फुल फॉर्म। क्या उनका काम क्या है? क्योंकि देखिए, आप कम्युनिकेट करके पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में कम्युनिटी लिखने में लेवल इजी होगा, क्योंकि में क्योंकि एक होल्ड अ सेकंड, ठीक है। बेसिकली क्या है, मैं टीचिंग यहाँ पे आपको बताने का मेन मकसद है कि अगर हम एक दूसरे से कुछ जान लेंगे तो एग्जाम में लिखने में बहुत इजी होता है, ठीक है। तो आशा वर्कर्स के बारे में आता है। हाँ, टेल मी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्लीज टेल अबाउट आशा वर्कर्स। मेरे भी वो वुमेन होते हैं जो मतलब वो विलेज का वुमेन रहता है और उसका एज ग्रुप मतलब 18 से लेके 40 या 45 साल तक होता है। एंड दे शुड बी लिटरेट आल्सो। 8 तक पास, मतलब 10 स्टैंडर्ड या 8वीं क्लास पास होना चाहिए, 8वीं 10th। क्लास पास। 10। यस, अच्छा, 10th। 10 8 से तो 10 आंगनवाड़ी फिर 8वीं होगा शायद मेरे ख्याल 12 से। 12। 12। अच्छा, 8वीं पता नहीं किस, याद नहीं आ रहा मेरे आज सुनिए को। सुनिए, आशा वर्कर फर्स्टली हम्म, प्रीवियस इट वाज 8, राइट नाउ हम्म, इट सिनेरियो चेंज, राइट नाउ दे 10th कर दिया है। अच्छा 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 आप अच्छा सही थे, 8 तक था पहले, अब वो चेंज होके 10th हो गया, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, अपडेट नहीं हुआ है। तो और वो फर्स्ट पर्सन होता है जो पीएचसी होता है ना, प्राइमरी हेल्थ केयर के इन बिटवीन कॉन्टैक्ट पर्सन हो जाता है। हम्म, और मतलब जो डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल रहता है या अगर तो उसके साथ फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है, और हम्म, पंचायत के साथ भी कांटेक्ट से कम्युनिटी रहता है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वगैरह, और फिर वो हम्म, जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में कितने प्रेग्नेंट वुमेन वगैरह है वो सब मॉनिटर हम्म, करने का उनका होता है। हम्म, उनको न्यूट्रिशन हम्म, प्रोग्राम, जैसे कि अनीमिया के लिए यस यस, गो ऑन गो आयरन ऑन। टैबलेट्स वगैरह करने के लिए भी आशा वर्कर्स ही इन्वॉल्व होती है। बेसिक एंड देयर न्यूट्रिशन। एज 5 to 45 years। ठीक है, 8 से इतना बेसिकली दैट्स आई वांट टू बी टीच यू गाइस। आप लोगों को आशा के बारे में, जिसको जिसको पता है, जिसको नहीं किसी और की आवाज नहीं आ रही है, मैं तो ही लोग अभिषेक एंड विशाखा बोल रहे हैं ना, अब्दुल
शायद से ऑफलाइन है, ये पता नहीं है। खैर कोई नहीं। बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब है, आप जितना जानते हो, ठीक है, जब आप रीड करोगे उसको बस आप सिक्वेंसली आप बता सकते हो, ठीक है, जितना भी आपने बताया, दैट ऑल, दैट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट फॉर द आशा वर्कर। तो एग्जाम में इसी तरह लिखना है। एग्जाम के लिए जब आप पढ़ोगे भी ना, आपको जस्ट रीड करना है, मगअप करना, इट इज नॉट दैट मच इजी। कुछ चीजें हैं जो मगअप करनी पड़ेंगी, कुछ डिफिनेशंस हैं, कुछ नए नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। जैसे जब आप डेमोग्राफी पढ़ोगे तो मैंने डेमोग्राफी में वहाँ पे आपको डिफिनेशन बताया, वहाँ पे मैंने एक आपको ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। मगअप करने के लिए आपको क्या चीज है, आपको एग्जैक्ट इन्फर्टिलिटी रेट का IMR का डिफिनेशन पता होना चाहिए, CUR का डिफिनेशन पता होना चाहिए, फूड CRB का वो पता होना चाहिए, सेंसेक्स आपको देखो, सेंसेक्स की कोई जनरल डिफिनेशन नहीं है, मतलब एक स्पेसिफिक डिफिनेशन नहीं है, बट सेंसेक्स के बारे में अगर आइडिया आपको है तो आप लिख सकते हैं कि हर पर 10 ईयर में होता है, ठीक है। इससे हम सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है, मतलब किसी भी कंट्री का, यहाँ पे आप सेंसेक्स, मतलब मैं सेंसेक्स में चला गया, बट एग्जांपल बता रहा हूँ कि सेंसेक्स के बारे में सिंपल सी बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हर 10 ईयर, एक तो पहले 10 ईयर पे होता है, ठीक है। यहाँ से हम सोशियो इकोनॉमिक, एक एक बंदे का क्या सोशियो स्टेटस है, कितना वो कमाता है, किस कहाँ तक पढ़ा हुआ है, कितना, सेंसेक्स से हम ये सब निकालते हैं दैट ना। इज PQLI बोलते हैं ना, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, That is- उसको हम डिटरमाइन करते हैं। और उसका एक होता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें तो हम लोग वो डिफरेंट टॉपिक है, आपको उसका भी डिफिनेशन लिखने को आएगा, SQLI PQLI भी लिखने को आएगा। आई वॉज टेलिंग अबाउट द सेंसेक्स, ठीक है। तो आपको जो, जैसे आपको आशा वर्कर के बारे में जनरल चीज पता थी, ठीक है, आपने बोल, अब मैं उसको सिर्फ रीड कर रहा हूँ, इसकी क्या क्या व्हाट इज मीन, ठीक है। आशा आशा इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए interference between community and healthcare system. It is she can be bridge between ANM and village. आप बोल रहे थे ना, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है एंड विलेज के बीच में ये ब्रिज का काम करती है, एंड शी शुड बी अकाउंटेबल फॉर पंचायत, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया आपने बता ही दिया कि पहली बात तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या है, लोकल भी होना चाहिए, ठीक है। 18 से नहीं, 25 से 45 साल की उम्र होनी चाहिए, ठीक है। एंड एटलीस्ट शी शुड बी स्टडी टिल 10th तक उसकी स्टडी होनी चाहिए। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आशा? Create awareness on health and social determinants and mobilize the community toward the local health planning and increase utilization and accountable for the existing health services. सिंपल सा काम है, वो जो भी किसी भी चीज का प्रोग्राम हो, ठीक है, और आपका HIV/AIDS का प्रोग्राम हो, मलेरिया का प्रोग्राम हो, किसी तरह का मतलब किसी की तरह कैसे कोई कैंप हो, या आपका ये ये करते हैं ना, क्या, पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम में, ठीक है, के लिए उसको एक्टिवेट करना, सारा वर्क, सारी चीज को बताने के लिए आशा वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। एंड आल्सो शी कैन टेल अबाउट द हाइजीन, लेकिन हाइजीन, वो हाइजीन के बारे में भी गांव में बताएगी कि कैसे आपको हाइजीन रहना है, या कोई प्रेगनेंट, किसी के यहाँ प्रेगनेंसी है तो वो उसका काम है, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज पेइंग हर, कि वो जाके, कोई जैसे अस्पताल नहीं आना चाहता, घर पे नॉर्मल डिलीवरी हो गई किसी के, तो वो डिलीवरी के बाद पहले भी जाएगी और डिलीवरी के बाद भी जाएगी, ये देखने की करने के लिए कि वो प्रेग्नेंट मतलब वोमेन भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है, एनीमिक नहीं है, क्योंकि उसको उतना चीजें बता दी जाती है, या उसको कोई चीज, और सिर्फ इतने नहीं, वो गांव के लेडी को मतलब इस तरह से उनको समझाएगी कि दे कैन कम टू वर्ड फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ठीक है, कि वो हॉस्पिटल में आके अपनी डिलीवरी कराएं, ना कि घर पे, ताकि वो और बच्चा दोनों सेफ रहें, ठीक है। एंड अभी आप बोल रहे थे ना, ये देने के लिए क्या नाम है, मेडिसिन देने के लिए, ठीक है, वो मीटिंग करेगी लोगों को, क्या नाम है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो हैं उनके बारे में भी वो डिस्क्राइब करेगी, ठीक है। तो दैट इज अ कॉमन थिंग अबाउट द आशा वर्कर। इसी में अभी आई थिंक विशाखा बता रहे थे कि जन सुरक्षा योजना इसी में आती है, ठीक है। अच्छा, जन सुरक्षा योजना का इसका मेन मीनिंग क्या है, किसके लिए है? औरतों के लिए है ना, जननी।
ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, ठीक है। इसका अचीव वो क्या है, क्या नाम है, एम क्या है, टू रिड्यूस द मोर्टेलिटी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। मतलब माँ की भी जैसे जो हमारे यहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो जाती है ना बर्थ के टाइम, हाँ, उनको बचाने के लिए है, ठीक है, दोनों को, ये इसके है। अभी नेक्स्ट वन आपका आ गया नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, वो अर्बन NHRM, NHRM के अंदर ये उसी का एक पार्ट है, एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है। इसमें एक तो ये आपका हो गया जननी सुरक्षा योजना एंड जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, दैट इज द नेम, समटाइम दे आस्क यू प्लीज राइट अबाउट द JSSK, दैट इज जननी शिशु सुरक्षा, इसमें दोनों लोग कवर होते हैं, ठीक है। उसमें 1 ईयर ऑफ एज तक होता है सर इन्फेंट्स। इसमें क्या क्या है, देखिए, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में फ्री डिलीवरी, फ्री ड्रग, फ्री डाइट, फ्री डायग्नोस्टिक, फ्री ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फ्री ट्रांसपोर्ट फ्रॉम होम टू, ये जो आपका मोबाइल यूनिट है ना, वो इसके अंडर आता है, ठीक है। जो मोबाइल यूनिट है ये 108 वाली, मतलब मैं यहाँ तो 108 है, ये जो लॉन्च किया है ना प्रेग्नेंट वुमेन लाने के लिए स्पेसिफिकली, वो इसी के अंतर्गत आता है। जननी सुरक्षा कार्यक्रम में आपको सब कुछ फ्री है, फ्री डिलीवरी, फ्री ड्रग, फ्री डाइट डायग्नोस्टिक एंड फ्री ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, इफ रिक्वायर्ड। इसमें क्या क्या है, न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन आपको देना है, मदर एंड क्या नाम है, काउंसिल मदर फॉर फीडिंग, मतलब मदर को हम देंगे ताकि वो उसको फीड करने के लिए, ठीक है। और बच्चे को भी देते हैं इसमें। विशाखा, ये विवेक जैन का PSM में मिल जाएगा ना डिटेल्स वगैरह सब? यस सर, हाँ हाँ मिल जाएगा, ये है। ओके, आई एम टीचिंग फ्रॉम दैट नोट्स एंड बुक, डोंट वरी अबाउट दैट, बट वहां से आप जो उठाओ विवेक जैन के नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। बट यही है कि वहां से आपको एलिब्रेट क्या करना, क्योंकि वो सर ने बहुत शॉर्ट में लिखा है सारी चीजें, ठीक है। मैं वहीं से बता रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट में बताना है, बट एग्जाम में लिखने के लिए आपको थोड़ा सा के पार्क देखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वहां से आपको थियरी मिलेगी। के पार्क से मैं स्टार्ट किया था, बट अब 1-2 घंटे के लेक्चर में आप के पार्क से मैं लिखाने बैठूंगा तो होता ही नहीं है अब, नहीं 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 क्योंकि वो नॉट सर, पॉसिबल है, ठीक हमारे है। हमारे कोई नोट्स नहीं होता, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट देगा ना जो, नहीं मतलब जो आपको नोट दिया होगा, इनका इनका एक जीरोक्स नोट है, ठीक है। देखो, एग्जाम के लिए मैं एक चीज बोलूंगा, आप विवेक सर का अगर नोट्स पढ़े हो तो आप लेके रिवाइज कर लेना, बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जो इंस्टीट्यूट ने आपको एक जीरोक्स कॉपी दी है ना, वो आप ले लेना, ठीक है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ लेने के लिए, क्योंकि उसमें थियोरेटिकल टाइप का है, क्योंकि एग्जाम में देखो वहाँ MHA के एग्जाम में लिखना है, ठीक है, प्रॉब्लम ये है, तो आप वहां से लेकर के लिख सकते हो, ठीक है। सर वो जेरोक्स देते हैं या मतलब कुछ नोटबुक जैसे नोट्स देते हैं नहीं नहीं, इंस्टीट्यूट वाले? जीरोक्स करके उन्होंने बाइंड करा रखा है टॉपिक वाइज, ठीक है, उसमें ओके आपको ओके सब ओके, कुछ मिल ठीक है जाएगा, ठीक है ठीक है उसमें ठीक आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप सीमा को बोलना, वो कुरियर कर देंगे आपको। हाँ, आप उनसे बात कर लेना, वो कोई कर देंगे, ठीक है नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो अभी एज पर योर कोर्स मैंने तो मतलब अभी तक के सारे लेक्चर खत्म कर दिए, बट लास्ट में अभी 1 घंटे का लेक्चर है, ठीक है। या तो आप लोग आपस में डिसाइड कर लीजिए कि आपको जैन, क्योंकि मैंने उनको सजेस्ट किया था कि एग्जाम से पहले, तो वो बोले नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा, तो पहले कर देना आप, तो एक बार आप लोग बता दो, तो वो लेक्चर मैं सोच रहा हूँ कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेंड कर लेते 1 घंटे का, ठीक है, तो सबके लिए बेनिफिट ही होता है, क्योंकि मैं अभी जो नोट्स मैं अपनी बना के दूंगा, ठीक है, वो आपको कुछ विवेक सर के नोट से होंगे, कुछ के पार्क से होगा, कुछ विवेक सर के बुक से होगा, ठीक है। तो इट विल आवर कम्युनिकेशन कि एटलीस्ट आप वहाँ पे कुछ ना कुछ लिख के लें, क्योंकि हमारे साथ यही दिक्कत हुई थी। दैट मीन विवेक जैन की सर नोट्स तो हमने पढ़ रखी थी, बट एग्जाम में एलिबरेट करके लिखने के लिए आपको थोड़ा सा चाहिए, मटेरियल चाहिए, क्योंकि नहीं याद रह जाता। अब विवेक सर का हम समझने के लिए तो ठीक है, बट लिखने के लिए थोड़ा कम पड़ जाता है, ठीक है।
अदरवाइज आप प्रेफर करेंगे तो कोई दिक्कत वो नहीं है। एमसीक्यूज के लिए ठीक है, वो देख लें सर के हाँ नोट्स। हाँ, वो एमसीक्यू और उसके हिसाब से बनाया ना सर ने, बट थियरी के लिए आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बट मैं जो अपने नोट दूंगा उसमें आई थिंक कि मैं वो सारी चीजें कवर कर दूंगा जितना आपको एग्जाम की। चलेगा सर, मतलब वो वाला भी चलेगा तो बहुत ही अच्छा है। मतलब हमें तो क्योंकि अभी इतने साल हो गए, पता नहीं नोट्स वोट्स कहाँ पड़ा हुआ है, वो बुक्स ही ढूंढना बस वही पड़ेगा यार, मेरे को। वो कोई दिक्कत नहीं है आपको, जो वही बोल रहा हूँ मैं, इसलिए क्लियर कर दिया ना, मैं जो अभी अपनी नोट्स पीडीएफ फाइल लूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, वही सही रहेगा, वही बेटर रहेगा। ठीक है। हम्म, तो उसमें तीनों चीज का मिक्सचर होगा, मिक्सचर इन द सेंस हम्म, विवेक सर हम्म, की जो खुद की बुक है वो, पहले तो के पार्क विवेक सर का नोट, और हम्म, हम्म, क्या नाम है, हम्म, विवेक सर का बुक, क्योंकि विवेक सर हम्म, के नोट्स और बुक में भी बहुत डिफरेंस है, ठीक है। हम्म, तो आपको नोट्स में बहुत शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे उनके, बट हम्म, इसमें क्या नाम हम्म, है, हम्म, बुक में काफी डिटेल है, ठीक है। तो हम्म, उस हिसाब से इस सब्जेक्ट का मैं आपको वो बना के दे दूंगा। ठीक है सर। ट्राई करता हूँ मुझे जहाँ से जो चीज़ बेस्ट मिलेगी ना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैरो के नोट्स में अच्छी हैं, तो शायद से मैं वहाँ से उसका जीरोक्स करूँ, मतलब उसका ठीक है पीडीएफ सर। लूँ, बट हम्म, कुछ बता नहीं सकता, बट आई विल प्रोवाइड गुड नोट्स फॉर यू गाइस, ठीक है, डोंट वरी ठीक अबाउट है। दैट। मैं एक्चुअली पढ़ाई से बिल्कुल टच में नहीं हूँ, अभी फिर मैंने से पढ़ाई बता शुरू। दिया ना, मैं समझ गया, इसलिए हाँ, तो मैंने बता दिया कि ये फर्स्ट सेम का हम्म, सारा सारा सब्जेक्ट आपका इंटीग्रेट एक साथ मिला हुआ है, ठीक है। आपको ठीक है। लगेगा ये क्वेश्चन इसमें भी, इस पेपर में भी आया था, इसमें भी आया था, क्योंकि वो पूरा इसी का है ही है, प्रिवेंटिव मेडिसिन का कुछ है ही है। सेकंड में ठीक है थोड़ी सी दिक्कत होगी, फाइनेंस वगैरह रहता है, भाई सर। मेरा अच्छा। तो वीक था इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी डिपेंड हम्म, करता है। और बायोस्टैटिक का जो है ना आपका, मैं, हम्म। आप दोनों लोग यूज करते हैं विवेक जैन की बुक? सर मेरे पास तो था वो बीएसएम पीएसएम का, विवेक जैन का प्रॉफ का भी बुक था, अभी पता या नहीं कहाँ ढूंढना पड़ा पड़ेगा। अच्छा। नहीं नहीं, अभी मैं गौतम नगर विशाखा से आपके नोट्स पास है ले क्या? लूंगा, पीएसएम का प्रेपरेटर का कोर्स। हेलो, विशाखा चली गई, विशाखा सर आपके पास है क्या विवेक जैन की नोट? सर नहीं सर, 2 साल पहले पढ़ी थी कोई बात वो नहीं, एफएम। एक्चुअली मैं बताना कुछ और चाह रहा था, ठीक है। चलिए मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सारी विशाखा के चीज पास पीएसएम का नॉलेज अच्छा है ऐसा लग रहा है, तो मैं सोचा कि तो पूरा रटे हुआ है पूरा ऑल द प्रोग्राम्स वगैरह। एफएमजी का एग्जामिनेशन था ना हाँ 2019 में, उसमें, मैंने वो दिया हाँ था हाँ हाँ इसलिए। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, कोई नहीं, चलिए, मतलब कि ओके, 4 बज सी रहे यू। हैं। ओके सर, थैंक ठीक यू है, सर। वेलकम, थैंक यू। प्लीज 6 बजे, 6 वो, बजे, हेलो 6 बजे निकलना यस सर। हेलो, आप लोग ना यस वो सर। लास्ट लेक्चर के लिए थोड़ा आपस में कोऑर्डिनेट कर लीजिए ग्रुप में, अगर ज्यादा से ज्यादा उस दिन लोग रहें तो दैट इज बेस्ट पार्ट, क्योंकि उस दिन में मतलब पूरा कोर्स ये सब्जेक्ट आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है तो यस सर। सर। आप लोग खुद बता देना टाइम एंड डेट, उस हिसाब से मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर आपका ओके कितना सर। क्लासेस था जो हमें मिस किया, तो फिर मैं सीमा से वैसे कोऑर्डिनेट करूंगा ना, क्योंकि अभी मेरा पहला दिन क्लास था ना, कि नहीं कौन से देखो, क्लासेस में। ये मेरा लास्ट मतलब एज पर देयर 7 या 8 घंटे ऐसे कुछ उन्होंने बोला टोटल पढ़ाने के लिए, ठीक है, जिसमें से ये ठीक है मेरा ये लास्ट क्लास था, आप से बात कर लेना सीमा। ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब कितने क्लासेस आपने करवाए, मतलब 7 घंटे को अगर आ, डिवाइड करके करें। यार मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितने क्लासेस मैंने कराए, पर मैंने टॉपिक वाइज कराए। फर्स्ट में मैंने आपका हेल्थ केयर करवाया था, ठीक है, उसके बाद फिर डेमोग्राफी का कराया था। लास्ट लेक्चर में भी मैं थोड़ा सा ये, क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी बहुत कम लोग आए थे, तो थोड़ा सा ये नेशनल प्रोग्राम शुरू किया था, ठीक है, आज मैंने उसको खत्म किया है, और ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ओवरऑल सिनारियो दे दूंगा, ठीक है। मतलब हाँ वो बेटर रहेगा ना, एक ओवरऑल सिनेरियो रहेगा तो हम पूरा रिवाइज कर लेंगे उसको, क्योंकि एग्जाम पे फिर हमें हेल्प भी हो जाएगा। हाँ सर। हाँ, ठीक, ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम, हम्म, हम्म, बाय बाय, टेक केयर। हम्म। थैंक यू सर।